Hello everybody, welcome back to my YouTube channel that is the BH Entrance Exam by our coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very edtech startup, and in this video we're going to talk about NFSU. तो जो NFSU School of Law है ना, इसका 5 year LLB प्रोग्राम BBA LL.B and BSc LL.B बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल आजकल अगर if you are somebody who's CLAT and A-Lit or maybe you are not planning to give O-Lets and your CLAT and A-Lit did not go well and you're looking for some law school, right? So in that case, NFSU is in trend right now. If you would ask any person, even if you are any coaching people or coaching mentors, etc., everybody or most of the people are also going to recommend NFSU to you. Now, but the thing is that we do not have any placement data as such. But what we're getting to know from the students over there is that the internships are going really great. Academics is really well. सो देयर लॉट मेनी थिंग्स टू डिस्कस राइट। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं एनएफएसयू स्कूल ऑफ लॉ 2026 एडमिशंस के बारे में। इफ यू आर somebody who's again preparing for OLETs, whose CLAT and NLET did not go well, you're preparing for LNAT, NLAT, Christ University का QLE, or you're preparing for BITS Law, MHCET, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और CUET और MHCET और फिर शारदा यूनिवर्सिटी और रिल्वा यूनिवर्सिटी, सारी वीडियोस एडमिशन प्रोसेस की, चाहे फीस स्ट्रक्चर हो, सीट मैट्रिक्स हो, हॉस्टल फैसिलिटी हो, या फिर कोई भी एक्सवाइजी इन्फॉर्मेशन है कॉलेज के बारे में रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स, वो सब वीडियोस में मैंने कवर करके रखा हुआ है ऑन माय यूट्यूब चैनल. सो आई एम गोइंग टू पिन माय ओलेट्स की प्लेलिस्ट इस वीडियो पर so that you get to know about those colleges via those videos. Okay, so let's get started with the very first thing. NFSU School of Law. So इसमें अगर देखोगे ये जो पर्टिकुलर लॉ स्कूल है ये 2021 में स्टैब्लिश हुआ था एंड इसका स्पेशली जो लॉ प्रोग्राम जो है वो 2021 में चालू हुआ था, बट दिस यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2009, राइट? तो 2009 से यू सी दैट देयर इज अ ग्रेट एलुमनाई बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ स्कूल, बट अगेन नॉट लॉ स्कूल पर से दिस यूनिवर्सिटी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉ स्कूल स्पेसिफिकली देन 2021 में ये चालू हुआ था और 2026 में इसका बैच अभी निकलना है, अभी निकला नहीं है, बट अगेन वी आर होपिंग दैट इट वुड बी ग्रेट. व्हाई आई एम सेइंग सो? बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आप इसका हर पैम्फलेट देख लो ना, इट इज अफिलिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बोला है, राइट? सो आप इसके पूरे पैम्फलेट्स में देख लो, इट इज अफिलिएटेड विद विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. सो इट हैज एन एक्रेडिशन फ्रॉम द कॉलेज, फ्रॉम द मिनिस्ट्री, सॉरी. एंड ये अगेन दे आर क्लेमिंग दैट प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी जाएंगी एंड दे आर गोइंग टू ब्रिंग मिनिस्ट्रीज ऑन बोर्ड, दे आर गोइंग टू ब्रिंग government agencies on board to provide placements to the students. Again, we are hoping all these things to happen. What we are getting to know from the students that it provides excellent internships and academic opportunities. तो प्लेसमेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी ही होगी, ठीक है? उसके बाद इसका देन लॉ स्कूल का नाम है स्कूल ऑफ लॉ ऑफ फोरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल स्टडीज, पॉलिसी स्टडीज. एंड इसके आप देखोगे दो कैंपसेस है, वन इज ऑफ गांधीनगर एंड द अदर वन इज इन दिल्ली. तो जो गांधीनगर का है ना, दैट इज द मेन कैंपस बिकॉज एनएफएसयू का जो रूट है ना, दैट स्टार्टेड फ्रॉम गांधीनगर इटसेल्फ. नाउ इट इज ऑफ कोर्स planning to expand it to other states. It is also expanded in other states, but its law school is primarily situated or limited to these two regions, that is Gandhinagar and Delhi. Delhi में in Rohini, right? So Gandhinagar में you see that it provides BSc LLB because it is the main campus. It provides BSc because it's of नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी. सो अब देखो बीएससी ही मेजरली इट ऑफर्स अदर टेक प्रोग्राम्स एटसेट्रा. सो इट हैज बीएससी एलएलबी इन द फर्स्ट को, and in Delhi it has BBA LL.B, right? Now you're going to see the batch size. The batch size is small. You are going to have 40 seats in BSc LL.B and 40 seats in BBA LL.B, so it is really small. Again, आप जो पर स्टूडेंट जो फोकस रहता है टीचर का एज वेल एज कॉलेज की तरफ से भी वो बेटर रेशियो में होने वाला है, ठीक है? दूसरा इस बार देखोगे क्योंकि काफी इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगेन मेंशन है, अगर आप ये बीएससी एलएलबी ले रहे हो तो आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए क्लास अपने +2 में, और अगर साइंस नहीं है, अगर आपके पास ह्यूमैनिटीज है या कॉमर्स है, फिर आपके पास मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स. ऑनेस्टली ऐसे भी एनएलयूज है, देखो कुछ एनएलयूज हैं जो बोलते हैं कि हम बीएससी एलएलबी प्रोग्राम आपको दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल साइबर लॉ वाला जो बीएससी एलएलबी का प्रोग्राम है जो एनएलयू भोपाल देता है, उसमें उन्होंने बोल रखा है कि आपके पास साइंस होनी चाहिए. लेकिन जैसे मैं वेस्ट बंगाल के बारे में बात करूं, वेस्ट बंगाल का जो बीएससी एलएलबी वाला प्रोग्राम है एनएलयू वेस्ट बंगाल का, वहां पर उन्होंने कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं लगा के रखा हुआ कि आपके पास साइंस होनी चाहिए +2 में, राइट? अगेन मैं अपने आपको सही ओपिनियन दूं इस केस में, अगर आप किसी ऐसे एक्सवाईजी कॉलेज में जा रहे हो या फिर इनफैक्ट बहुत अच्छे कॉलेज में भी जा रहे हो जो आपको बीएससी एलएलबी दे रहा है,
राइट, और अब हो कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के, तो फिर तो बिल्कुल ही मत जाना। राइट, ये मैं अगेन तभी बात कर रही हूँ जब कॉलेज ने कोई एज सच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा नहीं रखा है बीएससी एलएलबी के लिए, ठीक है। बट लोग आपको बोलेंगे आप सीख जाओगे बीएससी एलएलबी, बीएससी सीख जाओगे, करते करते सब कर लेते, नहीं हो पाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। Again, if you're from humanities and if you are thinking to pursue BBA LLB, तो वो हो जाता है, that is still again at least doable because people do it and it's not very very difficult, right? But BSc is again a very different arena, तो उस केस में बहुत difficult हो जाता है. But again, as they have fixed eligibility criteria, so it's science in +2. If not science, if humanities or commerce, then you should have maths or statistics level subject because I'm going to open the curriculum also in front of you. And once you'll see the curriculum, you will realize that they have innovative subjects in BSc LLB to teach. However, it's a bit traditional in BBA LLB because BBA में क्या ही introduce कर देंगे ना, but BSc में they're doing it. Obviously, you're going to prefer Gandhinagar campus because it is the main campus. Talking about GGS IP as well, you always prefer USLLS over any other campus like WIPS or Maharaja Agrasen. Why? Because it's the main campus. So you're going to prefer the main itself. Next, we are talking about it takes admissions via the CLAT scores. And CLAT score maybe I will let you know the cutoff of it. Like, तो एक बार मैं आपको वो दिखा दूं. I hope it's visible. Let me show you the right. So wait. Let me erase this once. This is the website that I have opened of NFSU. Plus, its admission notification has also come. Admissions have commenced for the year 2026 to 27 for the School of Law. They have commenced from 16th January 2026 onwards, and this video is being recorded on 30th of January 2026. Right? तो ये आपके पास आ जाएगी hopefully जल्दी video. Wait, let me erase this. It looks really untidy. कुछ चीजें मैं आपको दिखाने वाली हूँ. So this is the thing, as you can see, this is I'm going to open this particular link. Admissions open for School of Law programs. This is you're going to get this. So you need to scan this to move to the admission portal, or you can get this link for this. ठीक है, तो BSc LLB गांधीनगर, BBA LLB Delhi, right? Then you have LLM in cyber law, cyber crime investigation, and criminal law and criminal justice administration. ठीक है. Okay. Uh, then this is the admission registration guidelines for the Indian students. These are basically how to register. These are the steps involved, initial registration, etc. So you would not find any kind of difficulty while registering because they have given a full-fledged PDF for you, which would guide you while you would be registering. ठीक है, सारी चीजें हैं कि आपको फोटो कैसे अपलोड करनी है, दिस एंड दैट. Symbiosis also does the same when you need to upload your online documents and all. Symbiosis also does the same. It provides this kind of manual for you guys, which basically facilitates your document uploading process. Right. So let's see, I have come to the website of School of Law now. So School of Law Forensic Justice and Policy Studies. You're going to see this. These are the faculty details. You're going to see the program. Okay. कैंपस लाइफ एक्सेट्रा, इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर रही, ये आप खुद देख लो क्योंकि दिस इज वेरी सब्जेक्टिव. ठीक है. फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं, फीस इट इज पर सेमेस्टर. जैसे कॉलेजेस होते हैं, colleges they either take fees yearly or they take semester wise. It takes fees semester wise. So I'll show you, this is the brochure. Again, this would be they'll release the updated brochure. This is of 2022, but इतना भी कुछ बड़ा डेविएशन आया नहीं है इधर. ठीक है. यू गोना सी द प्रोग्राम्स इसमें, प्लस इसका ट्यूशन फीस 65,000 पर सेमेस्टर. अभी भी इसका सेम ही है, सो अभी जब रिवाइज आएगा तो देख लेना. ठीक है. तो पर सेमेस्टर इट्स अबाउट 1.3 lakh पर एनम. एंड of course, it does not include the hostel and the mess facilities. So BSc में again, I was talking about some of the innovative subjects that you would get to learn. You'll get to learn about OS concepts, web programming, relational database management system, तो C++, computer language, coding, etc. ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी इस पर्टिकुलर कोर्स में, ये आप देख सकते हो. देन BBA का कोर्स आई शो यू. तो BBA के कोर्स में ऐसा कुछ नहीं है. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये सब चीजें रहती ही हैं बीबीए में, बट ऑफकोर्स बीबीएससी में वो चीजें अलग हैं. ठीक है. दिस इज द 3 year LLB program also that it provides. 3 year LLB का प्रोग्राम 60,000. दिस इज द काइंड ऑफ थिंग. दिस इज अ नॉर्मल जेनेरिक कोर्स, इतना ही कोर्स होता है, राइट. लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर और एंड लॉ भी पढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात है. दे आर टीचिंग दिस बिकॉज हर लॉ स्कूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉ एज सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा है.
द एलएलएम प्रोग्राम ऑल्सो, एलएलएम लॉ स्कूल्स में होता है, जैसे 2 सालों की होती है, फॉर एग्जाम्पल आईपी एंड ड्यू ऑफर इट ऑफ 2 years, एंड देयर आल्सो सम अदर लॉ कॉलेजेस विच ऑफर इट ऑफ 2 years, बट जैसे मोस्टली एनएलयूज और प्राइवेट लॉ स्कूल्स हैं वो आपको 1 year का एलएलएम कराते हैं, तो 1 साल का एलएलएम आपको 2 स्पेशलाइजेशन पे आपको मिल जाता है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एक्सेट्रा ये सारी चीजों को मिल जाती है। दिस वाज द ब्रोशर ऑफ दिस। नाउ जब इसका जो फीस स्ट्रक्चर है हॉस्टल मेस के बारे में बात करूं, ओके, सो यू गोना सी हॉस्टल मेस के पर्सपेक्टिव से यू आर गोइंग टू गेट 50 अगेन, द फीस इज सेमेस्टर वाइज, सो इट्स 50 to 70K। there's some problem coming with my annotator, therefore I'm doing it like this। तो आज के लिए बस देख लो, बस समझ लेना, ठीक है, अदरवाइज होती नहीं दिक्कत, बट टुडे इट्स हैपनिंग। 50 to 70,000, that is also per semester। So I am going to add again, बड़ा, अगेन तुम बहुत थोड़ा रफ अमाउंट लेना, थोड़ा सा एक्सपैंड करके, डू नॉट टेक इट पॉइंट टू पॉइंट। अगेन इट्स ऑलवेज व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग योर बजट और मे बी एक्सपेंसेस फॉर लॉ स्कूल, 1.4 lakh per year for your hostel and mess, which for 5 years it is gonna be 7 lakh for 5 years, right? And इसका आप देख लो 5 years का, और आपका 1.3 लाख तो पड़ ही रहा है ये, 1 साल का ट्यूशन फी तो पड़ ही रहा है। सो इट इज अराउंड, इसका 5 साल का 6 हो जाएगा, सो देन अराउंड 15 lakhs मान के चलो, 13 to 15 lakhs, प्लस आपका अलग से कोई वो होगा, आप इंटर्नशिप्स के लिए गोना गो टू क्रॉस स्टेट्स, you are going to go for moot court competitions, for other competitions, again it depends on the college whether it reimburses it or not। There are colleges which reimburse, there are colleges which do not reimburse, so you would be going to competitions etc on your own expenses, but at times colleges do reimburse। So again, and considering other expenses also when you will go back home, flights and all, so लग जाएगा, आप थोड़ा सा roughly amount लेके चलो, 16-17 lakhs, right? But the thing is that we do not have anything right now to comment on the placements, though it is not। अच्छा, तो ऐसे भी कॉलेजेस हैं बहुत सारे, आप देखोगे वो प्लेसमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर पाते बच्चों को, कि आई वाज गेटिंग अ लॉट मेनी, आई सॉ अ लॉट मेनी रिव्यूज ऑन क्राइस्ट का कैंपस दिल्ली का, बैंगलोर का तो इट्स गोइंग ग्रेट, बट दिल्ली का जितना मेरे को पता चला इट्स नॉट गोइंग दैट ग्रेट। सो बाकी it depends on the reviews, it also depends on you, how you make use of those resources or opportunities that you get in your law school। It's not that you are thinking you will go to a top shot law school like NLSU Bangalore and you will get a placement or they will spoon feed you, they'll not spoon feed you, you need to do everything on your own। That is just the thing or the biggest shock that you get once you enter any college, be it not just law school but any college, right? So this is the brochure, admission brochure, important links आपको मिल जाते हैं इधर से, and about the campus and all, so this is the thing। और इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि आप discuss the fee structure, tuition fee, hostel mess, seat allocation, kind of thing। So they are integrating tech, AI and everything, so I hope that they provide good placements as they are claiming when this law school was commenced, then they claim they're going to provide good things, currently it's going great in terms of internships as far as I'm getting to know from the students। So I hope it does great and does place students at good places, ठीक है, government agencies and all। And yes, talking about the what is the cutoff, right? What should be your CLAT rank to get into NFSU? That should be around 3K to 5K for general category. Again, this is 3 to 4.5K and all. This is the rough thing that I'm giving this to you. So if you have a CLAT rank anywhere between this, then you would be safe. It would be a safe score to apply. Again, between this 5K में थोड़ा सा वो हो जाता है कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बट दिस ईयर फाइनली पहला बैच हमारा निकलेगा, वी विल गेट एन आइडिया अबाउट इट ऑल्सो। जैसे एक और कॉलेज है दैट इज फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसका जो 5 LLB प्रोग्राम है दैट इज द इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स ILC, तो वहां का भी द थिंग इज दैट अभी हमें अब 4th ईयर, अब उसका 4th बैच आएगा, तो इसका फर्स्ट बैच ग्रेजुएट होगा 2028 में, ठीक है, तब जाके विल गेट टू नो अबाउट द प्लेसमेंट्स। But as far as we're getting to know, because it has drawn its legacy from the three year LLB program from CLC, so we're expecting it is also going to be great because it has that due tag. But of course, it's a government college. It has due tag. It's there in North Campus, so it carries a lot of value. Plus, many people say it does not have an alumni base because it's 5 year, but it does have from the 3 year LLB one. There is immense, I would say, a huge alumni base from the 3 year LLB of DU। So वो तो they can obviously guide the 5 year LLB students। So this is the thing। So ये मैं आपको दिखा रही हूँ
there are colleges which are also equally good. जहाँ का placement का scene, we do not have any idea whether it is of NFSU or DU, but we are expecting that in दोनों का placement is going to be great, right? तो अगेन आने दो, इनके बैचेस निकलने दो 2026 का, क्योंकि हमें रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, बीट बी इन ड्यू, बीट बी ऑफ एनएफएसयू, both of these colleges are doing great currently. So let's see now, and stay tuned for getting more such videos. I think I have covered everything which was supposed to be covered, which would be relevant for the video for this exam. Not for this exam, but rather for this university. So then stay tuned, keep watching. If you have any doubts pertaining to any law entrance exam, any OLETs or any law school, if you want to know something about it, etc., you can connect with me on my Instagram ka main page of the BS Law Entrance exam via DMs or on the YouTube comment section. Or if you want to ask something personal regarding colleges, etc., if you have some personal factors, then obviously you can DM me or you can talk to me on Telegram. We have a specialized Telegram doubt solving group where we solve doubts. But if you want any personalized attention regarding some of the factors that you want to consider, be it be financial, etc., so we can talk on Instagram, right? And yes, LinkedIn business page is also there. Kindly follow that page if you want to connect professionally. So stay tuned. Bye.